Hello students, welcome back your math class, chapter 41, page number 60. In this chapter, we will learn about money, Indian currency, M-O-N-E-Y, money, I-N-D-I-A-N, Indian, C-U-R-R-E-N-C-Y, currency. Money means paisa, Indian means Bharatiya, currency means mudra. Okay, so here divisions of Indian currency. Indian currency divide in two types, rupee and पैसा. ओके हमारे जो मनी है पैसा है उसको डिवाइड करके ओके सॉरी उसको हम लोग क्या रुपी और पैसा में हम लोग बोल सकते. सो विच वन रुपी विच वन पैसा, नाउ वी विल लर्न. We use coins and notes to buy and sell things. We use coins. Coins means सिक्का और टना. And notes means notes जो कि पेपर वाले होते हैं. टन्ना मीन्स सिक्के. ओके राउंड शेप. ओके सो वी यूज कॉइन्स एंड नोट्स टू बाय सेल एंड थिंग्स. whenever we will go any shop और एनी मार्केट. ओके जब भी हम लोग मार्केट और शॉप कहीं पे भी जाएंगे तो हमको कुछ भी खरीदने और क्या सेल, जो सेल करता है उसको भी मनी चाहिए, जो खरीदता है उसको भी मनी चाहिए. बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना. ओके सो हियर वी यूज कॉइन्स एंड नोट्स टू बाय एंड सेल थिंग्स. हम लोग कभी भी कुछ भी खरीदने और सेल करने के लिए हमको मनी चाहिए. ओके द एब्रिवाइटेड फॉर्म ऑफ रूपी इज रूपी. रूपी का सिंबल क्या होता है? ये दिस वन रूपी सिंबल, दिस वन रूपी सिंबल. एंड पैसा इज पी, पैसा का सिंबल ये है. ओके 1 रुपी इक्वल 100 पैसे. 1 रुपी मीन्स 1 रुपया. 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. ओके 100 पैसे अगर हम लोग होगा तो वो 1 रुपया होगा, बन जाता है. ओके सो हियर 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी. 100 पैसे मीन्स 1 रुपी. ओके इंडियन कॉइन्स कॉइन्स मीन्स सिक्के. सो इन आवर कंट्री so many coins, 1 rupee, 2 rupee, okay 1 paise, 2 paise. So now here we will see that coins name. Okay coins of different denominations. Okay in India we used the following coins in old times. All these coins are used in our past. और जब हमारे दादाजी, ग्रैंडफादर और परदादा वो लोग ये सारे कॉइन्स को यूज करते थे. नाउ दीज कॉइन्स आर नॉट यूज्ड. ओके 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे एंड 20 पैसे आर नॉट यूज्ड टुडे. दिस ऑल कॉइन्स आर नॉट यूज्ड nowadays. Understood? This one 1 पैसे, this one 2 पैसे and this one 3 पैसे, this one 5 पैसे and this one 10 पैसे, this one 20 पैसे. Okay, this 1 पैसे 100, ये 1 पैसे आपके पास 100 होगा तो 1 रुपया होता है. Understood? Okay. Nowadays the following coins are used. Nowadays which coins are used? These coins are used. These one also. Okay, so this one 25 पैसे. Which one? This one 25 पैसे, this one 50 पैसे and this one 1 रुपया. Okay 1 रुपया, this one 2 रुपया and this one 5 rupees and this one 10 rupees coin. Okay so 25 पैसे and 50 पैसे coins are rarely used. This 25 and 50 are rarely used. Rarely means शायद ही और कभी कभी यूज होता है. बट दिस 1, 2, 5 and 10 always we are using. Okay so these are, what is this? Coins. Okay these are different coins names. Understood? Okay now let's come page number 61. Here Indian currency notes. Now these are called notes. These are notes. Okay so notes of different denominations. Okay notes also different, means 1 rupee, 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, like that different. Okay so now which one 1? This one 1. Okay here written 1. Okay so this one ek, what is here? A, what is this?
का क्या हो जाता है 1 रुपया. ओके, दिस वन 1 रुपया. ओके, 1 रुपया 1 rupees notes. Okay, this one 2 rupees notes. This one 2. Okay, how you know? Here written 2. Okay, then this one 5 rupees because here written 5. And every notes, okay, every notes you will see this picture, these pictures. Okay, so who is this one? This one Mahatma Gandhi. Okay, this one Mahatma Gandhi pictures. Okay, so here this one 5 rupees and this one 10 rupees. Here written 10 रुपया. Okay, 10 rupees को 10 रुपया भी बोल सकते हैं. And this one 20 rupees. Okay, this one 20 rupees notes. This one 50 rupees notes, not coins. Okay, 50 rupees coins not available. Okay, so this one all notes. Then next this one 100 rupees. 100 means 100 rupiah. Okay, 100 rupees. This one 500 and this one 2000. 2000 means 2000. Okay, so my dear students, now you know which one coins and which one notes. Okay, suppose if you buy one book, okay, that book rate is 50 rupees. Then how many notes you have to give? आपको कितने notes देना पड़ेगा 10 rupees का? You don't know. So 10 करके आपको 5 notes देना पड़ेगा क्योंकि that book rate कितना है book का rate 50 rupees. Okay. So now what this circle the notes and coins to make. Here questions here. Which one आप जो कि बना सकते हो उसमें क्या करना है आपको सर्कल करना है. ओके, सो हियर एंड दिस वन नोट्स ऑल्सो. सो प्लीज स्टूडेंट्स, नाउ यू नो विच वन कॉइन्स एंड नोट्स डिफरेंस. और दिस वन एवरी पिक्चर्स यू हैव टू ड्रॉ इन योर मैथ्स कॉपी. ओके, होमवर्क एंड प्लीज रीड पेज नंबर 60. This one divisions of Indian currency. Okay, and students, and how you will buy and sell that thing, you know now. Understood? Again one more example I am giving. Okay, you want to buy one biscuit packet. That biscuit packet rate is 10 rupees. Okay, how much? 10 rupees. Okay, this one 10 rupees. Okay, that biscuit packet rate is 10 rupees. Then you don't have notes, you have only coins. Okay, you have only coins. That coins 5 rupees 1 coins you have and some 2 rupees coins. Okay, then how much you have to pay? How much you have to pay that coins? You have to pay 5 rupees 1 coins. This 5 rupees 1 coin and 2 rupees. Okay, 2 rupees 2 coins. 5 7 8 then 5 6 7 and 8 9 then 1 rupees 1 coin. So this one you have to pay and 2 this one and 1 this one. So 5 6 7 and 8 9 and 10. Okay, then you will get that biscuit packet. Understood? So like that this chapter here finished. Okay, hope you understood. Thank you, student.